Hey guys, Namaste, this is Pallavi. Welcome to the channel and I hope you all are doing great. So in this video today, I'll create a Navratri look. Now some of you might have known कि नवरात्रि के हर दिन का एक कलर होता है and that's why I'm wearing this outfit today and मैं इसी को complement करता हुआ makeup करूंगी. And the products I'll be using to create this makeup look are all from Swiss Beauty. Amazing products and affordable prices. We all know that, right? Also, I'll be using this kit जिसमें कुछ makeup के must haves हैं from Swiss Beauty itself and बता देती हूँ इसमें क्या क्या है. इसमें है एक तो ये छोटी सी प्यारी सी लिपस्टिक है, देन वी हैव अ प्राइमर एंड उसके बाद है आई शेडो पैलेट जिसमें कुछ शिमर शेड्स हैं और कुछ मैट है and the last one is this makeup fixer. So all these products I'm going to use today while creating a look. So let's begin with it. Now I have already moisturized my face और मैं डायरेक्ट स्टार्ट कर रही हूँ प्राइमर से और प्राइमर मैं ये Swiss Beauty का यूज कर रही हूँ. It's a mattifying makeup primer which blurs pores and smoothens base. So I'm gonna dot this primer all over face and then अच्छे से स्प्रेड कर लूँगी फेस पे. थोड़ा सा और मैं लगा रही हूँ अपने टी जोन पे बिकॉज मुझे वहाँ पर बहुत ज़्यादा ऑयल आता है एंड इट्स अ मैटिफाइंग प्राइमर सो इट विल हेल्प कंट्रोल्स ऑयल. Okay, it's already giving me that mattifying effect. Loving it. प्राइमर के बाद मैं यूज कर रही हूँ फाउंडेशन और इस फाउंडेशन का नाम है एयर ब्रश फिनिश फुल कवर फाउंडेशन. सारे जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट. मैं यहाँ पर डायरेक्ट ब्रश से अप्लाई कर रही हूँ. अगर आपको थोड़ी सी नेचुरल फिनिश चाहिए तो यू कैन यूज अ ब्लेंडर ऑल्सो. Coverage of this foundation is really good. Can you see the difference? And I'm not even applying a lot of product. मैं बहुत ही थोड़ा सा product use कर रही हूँ and अच्छे से उसको blend कर रही हूँ. I've applied a very thin layer of foundation, but I got the finish which I wanted. Next I'm using this liquid concealer और इसको मैं apply कर रही हूँ जहाँ पर भी मुझे थोड़ा बहुत pigmentation है and also for highlighting purpose. It blends beautifully. Now after concealer मैं यहाँ पर दो प्रोडक्ट एक साथ यूज कर रही हूँ. एक है क्रीम इट अप ब्लश एंड द सेकेंड वन इज लिक्विड हाइलाइटर. सो इन दोनों को मैं मिक्स करके अप्लाई करूंगी तो इससे बहुत ही नेचुरल सा डूई सा ब्लश इफेक्ट आएगा. So I'm gonna take a little bit of brush on the palette and उसमें थोड़ा सा highlighter mix करूँगी. And I'm gonna mix these two and apply on my cheeks. It's a beautiful shade and it blends seamlessly. After that I'm using this micro precision eyebrow pencil to carve my brow. I just love the pencil जिसमें स्पूली भी होता है and एक साइड प्रोडक्ट होता है. It's too pointed and precise actually. बहुत ज़्यादा मैं आर्टिफिशियल ब्राउज नहीं कर रही हूँ. I'm just filling the gaps. Now we'll do the eye makeup, but उसके लिए हमको आई बेस बनाना ज़रूरी है एंड उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ सेम कंसीलर जो हमने पहले यूज़ किया था. आई शैडो के लिए मैं ये पैलेट यूज़ कर रही हूँ फ्रॉम द किट एंड इसका नाम है डुअल पासपोर्ट एंड शेड नंबर है 03. So firstly I'm taking this dark brown shadow. उसके बाद ट्रांजिशन के लिए ले रही हूँ मैं यहाँ पर सटल सा पिंक शैडो. Shadows are really good guys, I'm telling you. First of all they're pigmented and it blends beautifully.
नाउ लोअर लैश लाइन के लिए मैं ट्रांजिशन वाला शेड ही यूज कर रही हूँ बिकॉज बहुत ज्यादा मुझे बोल्ड नहीं करना है क्योंकि आई एम ऑलरेडी टेकिंग द लिप्स बोल्ड, सो इसलिए थोड़ा सा आई मेकअप सटल रख रही हूँ। नाउ आई एम टेकिंग दिस शिमर शैडो, इसको मैं अप्लाई करूंगी अपनी फिंगर से जस्ट इन द मिडिल पार्ट। उसके बाद आई एम यूजिंग दिस डीप ब्लैक काजल एंड सिर्फ थोड़ा सा वाटर लाइन में यूज करूंगी। इट्स टू ब्लैक गाइस, टू ब्लैक। एंड यू डू नॉट हैव टू ड्रैग, मतलब एक बार लगाओगे ऐसे स्वाइप करोगे आपको अच्छा सा पिगमेंट इसमें मिल जाएगा। यू कैन सी दैट, this is amazing. Lastly, for eye makeup I'm using this mascara. It is known as Precision Thickneck Long Lash Mascara. It's giving length to my lashes. It's good. I'm gonna apply a little bit on lower lashes as well. Now I'm going to apply this lip liner to define my lips and उसके बाद I'll use this liquid lipstick in the shade red. I'm so excited to use this shade. Wow. This lipstick is so beautiful. इसका shade number I'll tell you. It's in the shade 09 Romance Red. Now lastly I'm gonna set this makeup with this fixer which comes in a kit. And ध्यान रखो अगर आप मस्कारा के बाद लगा रहे हो तो cover your eyes, और अगर आप उसके पहले लगा रहे हो तो then it's fine. But I like to do it all after makeup. So यहाँ पर हमारा मेकअप कंप्लीट है। नाउ गिव मी सम टाइम टू फिनिश इट अप विद द ज्वेलरी एंड बिंदी एंड बाकी सारी चीजें। This is the final look and I'm loving the finish the products gave me. So guys, ये था आज का look and it is really simple to create. Let me know in the comment section आपको ये look कैसा लगा. And before leaving, just hit the subscribe button so that आप कोई भी tutorial miss ना करो. And now I have to take a leave. So until next time, bye bye.